first and the youngest female driver. This is the first time I think any sort of formula racing is happening in Kashmir and next to the lake at such quick speeds, and the scenery is amazing, the place is amazing, the track is amazing. So I think it's going to help in the growth of motorsports in the north part of India. ये usually closed circuit में चलती है गाड़ियाँ and ये काफ़ी fast होती है, up to 240 kilometers per hour जाती है. And 15 साल की उम्र के बाद हमें इस गाड़ी को चलाना अलाउड होता है. मैं 15 साल की और मैं दूसरी बार चला रही हूँ ये गाड़ी. I'm from Himachal Pradesh, so it feels really nice to drive a formula car, you know, in surroundings that I've seen in my whole life. Please do it in a place where there's nobody around, not on public roads especially. Close parkings, yes, obviously you can take permission, and that's the best way to learn. We started like that. We used to take permission from our local municipality and request them that if you can give this area for 2-3 hours. And I think like that you're also mentally very free to do things, because you know there's nobody coming from left or right. बदलता जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं तो वो हम सबको जो है दिखा रहे हैं. बस इसका एक ही कहना है मेरा कि जो अगर ये मान लो स्टंट भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग ना करें, क्योंकि ये सब लोग एक्सपर्ट लोग हैं. तो एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाए उसके बाद आपको जो करना है करें, लेकिन इसको बस उस हिसाब से ना देखें. हाँ, ये देखें कि एक जो चीज़ जो पूरे वर्ल्ड ओवर दिखाई जाती है, जो होती है, हमारे जम्मू कश्मीर में उसमें कहीं पीछे नहीं है. की तरफ से जो स्पोर्टिंग को सही रेसिंग को सही तरीके से लेके आए हैं कश्मीर में. I hope this goes to a right direction where the youth can engage in a better way to the racing tracks rather than doing things on the streets. Witness the beauty. This event is an event for adventure lovers, for sports lovers. So we decided to have a Formula 4 event यहाँ पर. We had drivers from all over the country. So this is just one in a series of such car shows and such adventure sports activities that we're going to have over the year. So हमने सोचा spring है, so let's start it with a bang. And what better place than to do it at Dal Lake with the backdrop of the suburban mountains. This is Shoran, so just drove around the road of Srinagar and around the Dal Lake, of course. So yeah, the scenery is really very nice and roads are amazing, in fact. So I was really very grateful to be chosen to drive over here. A big thank you to RPPL JNK Tourism for organizing such a wonderful event in Kashmir for the first time. For me it was a great honor, privilege to be able to drive the Formula 4 cars around the Dal Lake, and I know this is just the beginning of greater things to come for Indian motorsport in the future. ये पहली बार यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो टूरिज़्म के हवाले से एक प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और जो हमारी यूथ से यहाँ पे वो भी इससे इंस्पायर होंगे कि उनका भी एक फ्यूचर होता है, उनके भी अपने टैलेंट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, शौक होते हैं. तो ये चीज़ें देख के उनमें भी ये शौक बढ़ जाएंगे. आई होप कि हमारे यूथ्स भी आगे चल के इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें. खासकर टूरिज़्म के हवाले से बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हो रहा है ये. तो जो प्रमोशन के हवाले से बहुत अच्छी बात है एज़ पर द प्रमोशन आर कंसर्न. India's drifting champion from Chandigarh, Shanam Chekon, showcasing his talent, his skill. You can join us as well. Guys, you can come down and take few pictures.